हेलो ऑल। तो यूपीएससी ईपीएफओ ईओ 2017 का जो पेपर है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, हम क्या करेंगे, जो 120 क्वेश्चन आए हैं हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है हमारी टीम के साथ आप उसको समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ईपीएफओ ईओ का जो नोटिफिकेशन है वो 23 में भी आया है। 2021 में इसका एग्जाम हुआ था और इससे पिछला एग्जाम 2017 में हुआ था। और आज हम इस एग्जाम की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो डिस्कशन से पहले एक दो बातें समझ लेते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड कि ये जो एग्जाम था 2017 का, राइट, फरवरी में हुआ था। इस एग्जाम का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 120। राइट, 120 क्वेश्चंस में से 100 मार्क्स का पेपर था। अब तो 300 मार्क्स के आ रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर था। राइट, और इसका जो कट ऑफ गया था, जो कट ऑफ गया था वो था 49.5। राइट, अगर मैं यहां लिखूं मार्क्स के हिसाब से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके 49.5 या इससे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। यही चीज अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से समझूं तो मोटा मोटा अगर आपने 58 से 59 क्वेश्चन सही किए थे विदाउट नेगेटिव मार्किंग को हटाकर, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए आप इस पे भी जा सकते हैं। जब आप ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ईपीएफओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एनालिसिस, एग्जाम डेट, इन सब का एनालिसिस मिल जाएगा। और हम देख लेते हैं कट ऑफ का जो पेज है वो कुछ ऐसा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2021 के पेपर का एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगा और 2017 के पेपर का एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें अगर आपके 100 में से 49.5 मार्क्स आए अनरिजर्व्ड के लिए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 में से 59 थे, या 58 या 59 अगर आप माने, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। राइट, ठीक है, हम वापस आते हैं। तो कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए? 1.45 lakhs लोगों ने अप्लाई किया था। द नंबर वॉज इंक्रीज्ड इन द ईयर ऑफ 2021। राइट, नंबर वॉज इंक्रीज, इट वॉज अराउंड 2.3 lakhs। ठीक है। तो कट ऑफ जो था वो भी बढ़ गया था। राइट, तो कट ऑफ जो था वो बढ़ गया था, तो अगली बार और बढ़ेगा। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। कट ऑफ कीप वेरीज, इससे हम लोगों को कोई भी इंफेरेंस नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज वेटेज की बात कर लेते हैं। अगर आप वेटेज देखेंगे तो वेटेज में अगर आप देखेंगे वेरी कर रहा है अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। राइट, जैसे अगर आप लेबर लॉज एंड आईआरएसएस देखेंगे तो इसके 20 क्वेश्चन थे 17 में, ये घटकर 10 रह गए 21 में। राइट, इसके अलावा अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो ये भी डिक्रीज कर गए। फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस सेम ही रहे, इंग्लिश के भी सेम रहे। अगर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश, उसके भी सेम रहे। ठीक है। तो एक तरीके से जो कट ऑफ था, जो वेटेज था, वो भी अक्रॉस द सब्जेक्ट्स वेरी किया, कहीं सेम रहे, कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नॉलेज में देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो इससे हमें क्या अंदाजा लगेगा? इससे हमें कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। अगेन, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कोई लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी में इक्वल वेटेज है और आपको जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट और लेट अस सी ईच क्वेश्चंस नाउ। Okay, let us start with questions of numerical ability and reasoning. Two vehicles which are 100 km apart are running towards each other in a straight line. In how much time will they meet if they are traveling at speed of 45 km per hour and 80 km per hour? So there are two vehicles which are going in opposite directions. One has a velocity of 45 km per hour, other has a velocity of 80 km per hour. The distance between them is 100 kilometers. Therefore, the time taken will be nothing but distance divided by relative speed, because they are going in opposite directions. So velocities will get added, 100 by 125, which is 4 by 5 hours, which is nothing but 48 minutes. Correct answer is C. Next one, the price of an article is increased by 20%. Further, there is a 5% tax on the increment. Okay, so if initial price is X, then it is increases by 20%. It means it becomes X plus 0.20X. Then it says there is a 5% tax, but this tax is not on entire amount, but tax is on the increment. How much is increment? This one is increment. So the tax will be 0.05% of 0.20x, which is nothing but 0.01x. So total becomes
Now my total becomes x plus 0.20x plus increment, which is 0.01x. So it is 1.21x, and this value is equal to 1331. So 1.21x is equal to 1331, which gives me my x, which is original value, is nothing but 1100, and therefore correct answer is C. Next one, a cricket bet is purchased at 20% discount. If the selling price is 100 rupees, what is the original price? So your selling price is equal to marked price into 0.80. Why 0.80? Because there is a discount of 20% and selling price is given to be 1000. From this I can find my marked price or original price, which will be nothing but 1000 divided by 0.80. It becomes 1250. Correct answer is D. Next one, which of the following diagram represents tea producing places are either in Assam or in Bengal? So guys, the statement says that they are either in Assam and or in Bengal. It means they are nowhere else. So second thing is that there cannot be any intersection between Assam and Bengal. They are separate states. So only fourth can be the option. Why? Because so I'll show you. So guys, this green area is my Assam, and blue area is my Bengal, and the tea producing area is shaded. Okay, so it shows that the tea producing areas are in Assam or Bengal and it is nowhere else. Therefore, correct answer is D. 110, next question. It says, suppose the remainder obtained when x is divided by 61 is 2. So you divide x by 61, we get a remainder of 2. It means x can be written as what? 61k plus 2. 61k plus 2. Now it says if this x raised to power 7 is divided by 61, it means this raised to power 7 is divided by 61. So this number can be written as nothing but this into 61k plus 2 into 61k plus 2. How many times? 7 times. So divide each of them by 61. So guys, what you will get? You will get 2 in the each case. Therefore, the answer will be 2 raised to power 7 divided by 61, which is nothing but 128 divided by 61. 61 into 2 is 122. Therefore, remainder is 6. Next one, what is the maximum number of spherical ball that can be there in a box of height, a cubical box of height 10 centimeter? Because it's a cubical box, therefore height is equal to length is equal to breadth. So I'll just show you in the 2D view that this side is 10, this side is 10. So how many spherical balls can be there? Just consider the circle. Each circle has a radius of 1. It means diameter is 2. So 2, 2, 2, 2, 2, so on. So there can be 5 balls on each side. So 5 into 5 and then height of 5. So 5 raised to power 3. It is 125. Correct answer is B. Next one. In a city, 80% population eat rice and 90% of rice eaters are non-vegetarian. So 80% eat rice, and out of these 80%, 90% are non-vegetarian. It means 90% of 80% are my are the guys who eat rice, but they are non-vegetarian. Therefore, this number becomes 72% are those who eat rice, but they are non-vegetarian. And what you have to find, who are vegetarian rice eaters. So out of total population, 80% eat rice. It means 0.80 guys eat rice. And out of this, how many eat non-veg? 72%. So 0.72x eat non-veg. So veg will be 0.80 minus 0.72x. So 0.08x, which is nothing but 8%. Correct answer is B. Very simple question. Okay, two vehicles A and B travel with uniform speed of 30 km and 60 km per hour respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle reaches the destination, then travels back. Assume that loss of time to change the direction is negligible. If x is the distance traveled by slower vehicle, what is the value of x? So guys, what is happening? So there are two places, okay, and they are at a distance of how much? This distance is what? 120
kilometer. Now faster one is in green. So this faster one, guys, goes with a speed of 60 kilometer per hour, and the slower one goes with a speed of uh, 30 kilometer per hour. Okay. So faster one goes first. So fast, of course, this faster guy will go and it will reach in how much time? Total is 120 kilometer. 60 kilometer is the speed. In 2 hours, faster one will reach this point. If this is point X, this is point Y. Faster one will reach at point Y in 2 hours, and then he will start back. By the way, where slower one will be at that point of time? Slower one has a speed of 30 kilometers. So in 2 hours, he will go 60 kilometers, which is nothing but half of it. So now at this point of time, slower one is going like this at a speed of 30, and the faster one is going like this at a speed of 60. How much is the distance between them? So the distance between them is what? 60 kilometer. In how much time will they meet? 60 plus relative velocity of both of them, which is 30 plus 60, 90. So 2 by 3 hours. So in 2 by 3 hours, they will meet. From when? From the point Y starts back, or from the point when X has already reached the middle point. From that point, in 2 by 3 hours, they will meet. Okay, and what you have to find out, how much will slower vehicle travel? Slower vehicle has a speed of 30. So in 2 by 3 hour, how much will he travel? Into 30, 20 kilometer. So he will go this 20 kilometer before he meets. He has already covered 60 kilometer. So 60 plus 20 is 80 kilometers is a distance which slower vehicle will travel before they meet. Good question. Price of a bottle of a cold drink is rupees 10. One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. If person has 1000 rupees and 90 empty bottles, then how many by end of everything, how many empty bottles will he have? So guys, he has got 1000 rupees and each bottle has a price of 10. So he will buy 100 of them. From this 100, again he can buy 10. Okay, from this 10, again he can buy 1. 19 he already has. So 19 plus 1, now he has got 20 empty bottle thus, and now with 20, because each empty bottle can be replaced, 10 empty bottle can be replaced by 1. So 10. So 2 more bottle he can get. Obviously now he cannot replace anymore because the minimum number is 10. So therefore by the end of everything he will have 2 empty bottles. If the radius of new spherical container is double the radius of old spherical container, then what is the ratio of volume? Very, very easy question, guys. This radius r becomes 2 times. Okay. Now volume is given by what? 4 by 3 pi r square. In this case, volume will be 4 by 3 pi 2r cube, not square. Sorry, I said square. It's cube. So it will be 4 by 3 pi into 8r cube. So you can clearly see that this is 8 times. So old sphere will have a volume of 1, new will have volume of 8 times. So ratio of new is to old will be 8 by 1, which is C. Correct answer is C. A container is filled with 300 liters of hydrogen gas. First day it loses 100, and every day it keeps losing 1/3 of the volume. Then how much it loses we have to find out. So guys, after 1 day, how much will it lose? After 1 day, it will lose 1 by 3 of 300. After second day, how much will it lose? Again, multiply the previous term by 1 by 3. After 3 days, how much will it lose? 1 by 3 into 1 by 3 into 300. So this series can be written as 300 into 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube plus so on. And it will go up to infinity. So if ratio is less than 1, sum of terms to infinity is a or 1 by r. A is first term, which is 1 by 3 into 1 minus 1 by 3. So 1 by 3 divided by 2 by 3, and it becomes 1 by 2. So this value will become 1 by 2. So 300 into 1 by 2 is 150. So even if this will keep happening for infinite days, total loss will be 150, and there will be 150 gas left. So obviously on so it will possess at least 150 liters of gas on 100th day. In fact, this will be for 100 or any number of days. At the end of
at the end of it, maximum gas which you can lose is 150 liters only. Therefore, correct answer is D. The area of smaller circle which contains a square of area 4 centimeter. So guys, what is happening? This is my square and this square is inside a circle. This square is inside a circle. Now this square has a area of 4 centimeter. It means it will have a side of 2 and 2. So this its diagonal will be 2 times the side of square. So root 2 times side of square. So it will be 2 root 2. So now clearly we can see that the diameter is 2 root 2. So radius will be root 2. And what is the area of circle? Area will be pi r square. So pi into root 2 square, which will be 2 pi. Correct answer will be B. Okay, next one. Which is the image of object? Okay, clearly you can see that A is the image of the object. Okay, next one. 3% ABC run a business together and their share are 17%, 37% and 46%. And if the difference of profit of B and A is 1000 rupees, as you know guys, the profit is shared in the ratio, in the same ratio in which money is invested. So difference between A and B is 37% minus 17% is equal to 20%. So this 20% difference is equal to 1000 rupees. So 20% is 1000, then 1% will be 1000 by 20 and 100% will be 1000 divided by 20 into 100 and this will become 5000 rupees. Now what is the question? What is profit of C? Profit of C is what? 46%. So 46% of total profit, which is 5000 rupees, come out to be 2300. Correct answer is A. Next one. If circumference of a circle is 2 pi, then area of square inscribed in it will be. So if this is my square and it is inside a circle, okay. Now it says circumference of circle is 2 pi. It means 2 pi r is equal to 2 pi r is equal to 1. So radius of circle comes out to be 1. Okay. So what will be diameter of circle? 1 plus 1, 2. So diameter of circle will be 2. And this diameter of 2 is equal to what? For example, side of square is D. Then how much is diagonal of square? Root 2D. And this diagonal of square is nothing but equal to diameter of circle, which is 2. Therefore, the side of square will be 2 by root 2, which is nothing but root 2. And what you have to find? You have to find area of square. Area of square will be what? D square, which will be root 2 square, which is nothing but 2. And correct answer is D. Thank you so much. Okay. The question is, who is the author of the work, The Evolution of Provincial Finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance? So, straightforward, the answer to this question is Dr. B.R. Ambedkar. Next question. In the context of international affairs, which one of the following is correct about Lord Curzon? So out of the 4 options, we have to identify that which statement is correct regarding Lord Curzon. Okay, so he advocated a pacifist policy. This is incorrect. He wanted England and Russia to become friends against China. No. He wanted to lead a flag waving mission to the USA. No. So the only correct statement regarding Lord Curzon is that he wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan. Actually, during his official tenure as Viceroy of India, Lord Curzon paid special attention to Persian Gulf, right? So he also started a Quetta Sistan route and also deployed British official as resident in Persia to look after everything there, right? So correct option is B. Okay, next question. Which one of the following is correct about SM in British India?
So if we look at the option, the correct option is C. It was separated from Bengal in 1874. So actually in 1874, Assam was detached from Bengal. Okay. And it was made into a separate chief commissionership. Right. And in 1874 itself, Silhut was brought under the umbrella of Assam only by the Britishers to make the state economically viable and self-sustaining, right? So C is the correct option to this question. Next, what were the peasants associations set up in Kerala in the 1930s called? So this is very simple question. The peasants associations in Kerala were known as Kashaka Sangam. So correct option is C. Okay, why did the Congress declare 9th May to be Ethiopia Day? So 9th May was declared as Ethiopia Day by the Congress because the Congress actually want to support Ethiopia against the attack of Italy in 1936, right? And wanted to consider uh, uh, this as the freedom struggle of Ethiopia against Italy, right? So in order to express the solidarity and sympathy of Indians towards the Ethiopians, it was declared as Ethiopia Day by the Congress. Okay, so correct option is C. Okay, next question is who set up Bharat Stree Mahamandal, which first met in Allahabad in 1910? Again, a very simple question from history. So this was the first women organization in India, and this was founded by Sarala Devi Chaudhrani, right? And in Allahabad in 1910. So correct option is C. Question is, which one of the following is not a feature of the non-cooperation movement? So we can easily identify looking at the options given with respect to this question. We have to identify which is not the feature belonging to non-cooperation movement. So this is a very significant movement with respect to Indian freedom struggle, right? So if we look at option A, economic boycott was intense and successful. Yes, this was the feature of non-cooperation movement. Look at option C. It was marked by uneven geographical spread and regional variation. So many regional variations were there for this non-cooperation movement because of the differences in the causes of the struggle in different regions. So that is why this statement is also correct. It means it is the feature of non-cooperation movement. Look at the option D. Along with non-cooperation, other Gandhian social reform movements like the anti-liquor campaign achieved some success. Yes, during the non-cooperation itself, other reform movements, for example, anti-liquor campaigns, they came out very successfully. So that is why this statement is also correct. The only statement which is not among the feature of the non-cooperation movement is that the middle class participated in very large numbers in the movement. Although the middle class led the movement in the beginning, but later actually the middle class showed a lot of reservation about Gandhi's non-cooperation movement. So that is why this statement is not the feature of non-cooperation movement, right? Next question. Which one of the following publications was started by Khan Abdul Ghaffar Khan in 1928? Again, a question is very simple and straightforward. So in 1928, Khan Abdul Ghaffar Khan came out with Pakhtun publication, right? So answer is A. Who among the following was the founder of the Arya Mahila Samaj in the early 1880s? So if we talk about this question, Arya Mahila Samaj, it was founded by Pandita Ramabai, right? And that too in 1882. And basically this was formed to empower and educate women to live a dignified life. So correct option is C to this question.
Okay, next question. Who among the following is considered to be the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? Actually, this is quite a common question from the history if we look at the question, right? So, straightforward answer is Surendranath Banerjee. He was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist, right? Okay, next question is which of the following was or were the reasons for the lack of economic development in India in the 19th century? So if we look at the options, officially the British government was committed to a policy of laissez-faire, but it was actually a policy of discriminatory intervention. So this was also the reason for the reason for lack of economic development in India. Apart from this, the second and third options which are stated, they were also among the reasons for the lack of economic development in India. So European entrepreneurs, they had connections to banks and agencies, whereas Indians, they were only having kin, family and castemen as source of funding, right? The third point, when plantations were transferred to individual capitalist ownerships, native investors were deliberately ignored. So the correct option to this question is answer D, right? With social reformer's autobiography entitled Looking Back describes his experience in setting up schools for women in Pune in 1890s. So again, a very straightforward question from history. And this autobiography, Looking Back, belongs to Dhundo Keshav Karve. So correct option is A. Next question is, who was the first Director General of Archaeological Survey of India? Again, a very simple question. The answer to this question is Alexander Cunningham. B. Okay. Next, which of the following works was not contributed by the famous social reformer Begum Rokeya? So, if we look at the history, Begum Rokeya is associated and is famous for these works, Ardhangani, Greha, Sultana's Dream, right? So Mother India is not among the works of Ruqayya Begum. Okay, so the answer to this question is C. Next question, which one of the following is not a characteristics of the Mughal Chronicles? So Mughal Chronicles were the official documents and wherein the life of the king and how the administration at that time was this has been depicted in the Mughal Chronicles, right? And if we go by the options A, B and C, these all are characteristics of Mughal Chronicles. And D, they contain brief biographies of the authors of the chronicles. No. So this is not correct with respect to these chronicles. Okay, fine. So yes, certainly there was a chronological records of events and it is a repository of factual information about the Mughals. And yes, they allow us to understand how imperial ideologies were created and disseminated, right? So correct option to this question is D. Now, next question is, in case of gold, revenue is recognized in the accounting period in which the gold is mined but not sold. Okay, so the revenue is recognized in that accounting period in which the gold is mined and not sold. Okay, correct option is C to this question. Okay, 57th question says, as per the traditional approach, the expense to be matched with revenue is based on basically if we uh, talk about determination of amount of expense with revenue for measurement of business income, we have two approaches. That is, one is our traditional approach, which has been talked about in the question, and another one is replacement cost approach, right?
So under traditional approach, whenever there is a matching of expense with revenue, that is done on the basis of your actual cost or original cost. And under replacement cost approach, the matching is done on the basis of replacement cost, right? Instead of original cost. Right? Like, for example, I give you example to make you understand these two approaches better. For example, if goods are purchased last year at the rate of rupees 20 per kg, let's say, right? And sold, so this is last year price at which the goods were purchased. But in current year, they have been sold at the rate of rupees 30 per kg, right? So simply the profit will be taken as rupees 10 per kg, irrespective of the purchase price of the goods prevailing in the market in the current year. So this cost, the actual cost we are considering here. We are not bothering about what is the current market price of these goods, right? So under traditional approach, we determine profit like this. Whereas in replacement cost approach, taking the same data, assuming that the goods were purchased in the last year at rupees 20 per kg, and now in the current year, they are sold at the rate of rupees 30 per kg. However, the market price, current market price of these goods is 25 per kg. So how would we determine under replacement cost approach? The profit would be determined like sales 30 less replacement cost, that is 25, not 20, right? So this comes out to be 5, and in this we will add profit realized out of price level changes or price fluctuations, right? So this is 5 plus 5. So how much is the profit out of price fluctuations? That is 5. Again, it comes to 10. So profit is determined. So although the profit is same under these two approaches, but replacement cost approach gives us the better analysis of the profit. Okay. Fine. So traditional approach is simple as compared to replacement cost. However, replacement cost is giving us much better analysis of the profit. Okay. So the answer to this question is original cost. Okay. Next question is preliminary expenses are the examples of, out of the 4 options, the correct answer to this question is deferred revenue expenditure. So what are my preliminary expenses? Preliminary expenses are those expenses which are formed during the formation of a company, right? So, and what is deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure is basically it's a revenue expenditure which is not completely written off in the year in which it is incurred, but it will be spread over the year during which the benefit is available. Okay. So preliminary expenses, research expenditure, any kind of development expenditure, the benefit is available in the future years. So they are not completely written off in the same year, but they are spread over the years in which the benefit is available out of that expenditure. Okay. So the correct option to this question is C. Okay. Depreciation of fixed assets is an example of revenue expenditure or expense. Okay. So depreciation is it is like whenever there is a decrease in the monetary value of the assets,
over time due to use, wear and tear, obsolescence. So that is what we known as depreciation, and it is a revenue expenditure. Okay. So correct option is D to this question. Very simple question from accounts. In the context of accounting, the term IFRS stands for International Financial Reporting Standards. Okay. So option A is correct. Okay. Next in this question, from the information given below, we have to calculate the sum insurable. So how would we calculate? Date of fire is given 1st of March 2016. Turnover is given 88 lakhs. And if you look at this special circumstance clause, it provides for the increase of turnover by 10%. So in order to calculate the sum insurable, means how much for how much amount the insurance policy is to be taken, we have to identify that based on the data given, right? So our turnover is in this question is 88 lakhs, right? From 1st of March 2015 to 29 Feb 2016, and fire occurred on 1st of March 2016, right? So there is a clause, special circumstance clause, which basically provides for increase of turnover by 10%. So if we do 10%, if we add 10% to it, this gives us the value 8,80,000, right? Okay. So this comes out to be 96,80,000, right? And my gross profit here is 20%. Okay. So 20% of this comes out to be, that is 19,36,000. So here comes my answer, option A, right? Okay. Simple. So we can do other way round of this question also. So our turnover is 88 lakh provided in the data, right? So 20% of 88 lakh is, because gross profit ratio is 20%. So this comes out to be 17,60,000, right? Okay. And when we do the addition of 10% out of this clause, then that comes out to be 1,76,000, and it gives me a total figure of 19,36,000, right? So correct option is A. Okay. Next question is, income and expenditure account is a nominal account. So rule of nominal account is all expenses are debited to this account, this kind of account, and all incomes are credited to nominal account, right? So income and expenditure, basically it's a account which is maintained by non-profit organizations. So it's a kind of nominal account. Correct option is C to this question. Okay. Next is legacy. Legacies are generally, so what is legacy? It's a amount or asset which is received as per the will of the person, right? So these are receipts, right? And these are capitalized and taken to the balance sheet. Okay, fine. So these are non-recurring in nature, so that is why they need to be capitalized and taken to balance sheet. So correct option to this question is A. Okay, the abnormal loss on consignment is credited to, again question is from consignment, and we have to discuss the treatment of abnormal loss. So in consignment, we know that normal loss, whenever there is a normal loss, it is included in the value of the goods itself, right? Whereas abnormal loss, what is abnormal loss? Abnormal loss is any damage to the goods due to theft or natural calamity or any kind of accident, right? So the
treatment or accounting for abnormal loss is done in such a manner that the consignment profit is not to be affected, right? So it is credited to consignment account. Okay, fine. So correct option to this question is C. Next is when goods are purchased for the joint venture, the amount is debited to joint venture account. Okay, finally, fine. So correct option is B to this question. Okay, 66th question says, consider the following: rate of gross profit is given to us and sales is given. Again, this is a very simple question. The rule of accounting says that 1/4 of cost is equal to 1/5 of sales, right? We all know this rule, right? So because gross profit says 25% on cost of goods sold, it means it is given to us that gross profit is 1/4 of the cost. So sales figure is given. So alternatively, we can deduce out of this thing that the gross profit is 1/5 of sales figures. So 1/5 of 20 lakhs comes out to be 4 lakh. So correct option is D to this question, right? Okay, branch account under debtor system is again a nominal account, right? So the correct option to this question is C. Okay, 68. The cost of electric power should be apportioned over different departments according to. So basically, we have to identify the basis of overhead cost. So suitable basis should be selected in order to apportion the overhead cost to different departments. Okay, so correct basis for the correct basis for apportioning the cost of electric power is horsepower multiplied by machine hours, right? So correct option is C. Okay, under which schedule of the Companies Act 2013 the formats of financial statements are prescribed? Again, a very straightforward questions from the Companies Act, and the answer to this question is Schedule 3, right? In the absence of any provision in the partnership agreement, profits and losses are shared by the partners. So a straightforward question from the Partnership Act. And because it says there's absence of any provision in the partnership agreement, then this means that the profits and losses are shared by the partners equally. So correct option to this question is option B. Okay, the question says which one of the following statements regarding an overseas citizen of India is not correct? तो OCI की बात कर रहा है. OCI से हमारा मतलब होता है NRI से. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2015-16 के अराउंड OCI में ही मर्ज हो गया था. तो इसके ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा भी सही है. बट OCI एंड NRI जो है वो सेम नहीं है. इट इज एट पर विद द NRI इन ऑल मैटर्स. ये एकदम गलत बात है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016. ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन ए देखोगे, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट. ये बात एकदम सही थी, पर इसमें एक प्रोविजो भी दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है टू चेंज दिस फैक्ट, और उसने NRI को भी अलाउड कर दिया है. इसलिए ऑप्शन ए सीधे सीधे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और हमारे लिए सही आंसर. Next question. Forced labor or beggar is a violation of which one of the following articles of the Constitution of India? तो आर्टिकल 23 यही बात करता है कि prohibition of trafficking of human beings and also forced labor. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं
Which one of the following statement regarding the Constituent Assembly of India is not correct? 1946 में असेंबली आई थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि it was composed of members who had been elected indirectly by members of the provisional legislative assembly. ठीक इसी प्रकार बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, पर जो डी ऑप्शन है उसमें वो बोलता है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एकदम गलत बात है, क्योंकि इलेक्शन से ही डिटरमाइन हुए थे. ऑल्दो दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली. ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. बाकी तीन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. 324 की, 280 और अराउंड 344 में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा. ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, बात करते हैं हम. सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज. तो सोशल कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. तो कॉस्ट जो सोसाइटी को पड़ी उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट, और इकोनॉमिक कॉस्ट जो बेसिक उस चीज को खरीदने में हमने जितने पैसे खर्च किए, दैट इज एन इकोनॉमिक कॉस्ट. तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी में, इसमें सिंपल सी बात करता है कि कॉस्ट बोर्न बाय सेंटर्स इज पॉजिटिव. तो सोशल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही यही कि जो कंजम्पशन है वो लिमिटेड टू दैट पर्सन ओनली नहीं रहा, एक सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट आया. तो बाय स्टैंडर्ड के ने ऊपर जो कॉस्ट बोर्न किया है वो पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो साथ में अगर जो आदमी खड़ा है, इफ ही इज गेटिंग समथिंग सम डेट्रिएशन इन हिज हेल्थ, तो उसको हम क्या मानेंगे, कॉस्ट जो उसको ठीक करने में लगेगी, एंड दैट इज कॉस्ट बोर्न बाय स्टैंडर्ड. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996. पैसा एक्ट आया था, इट परमिट सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी थी ग्राम सभा की. तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं. ISRO in August 2016 successfully test launch of supersonic combustion ramjet engine. Which of the following statement with regard to scramjet engine is are correct? तो ऑप्शन 1 एकदम सही है कि it can efficiently operate both in subsonic and supersonic combustion modes. But according to ISRO, India is the first country to demonstrate the flight testing of scramjet engine. ये गलत बात है. India was the fourth country to demonstrate that. इसलिए स्टेटमेंट 1 ही सही है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन. काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये सरकार का, 2015-16 में आया था स्टार्टअप पे. तो स्टार्टअप हब क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आपस में एक तरीके से कांटेक्ट में रह सकें. इसका जो भी सेटअप था वो ट्रिपल आईटीज में था, आईआईएसईआरस में था, एनआईटीज में था, बट इट वाज नॉट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम एनविसेक्स ईच बैंक ब्रांच टू गिव लोन बिटवीन ₹10 लाख to 100 लाख. तो ये स्कीम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए थी टू द डिसएडवांटेज पीपल ऑफ द कंट्री, यानी जो एससी है या फिर वुमेन है. तो इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 सही है और 3 सही नहीं है, और देयरफॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, व्हिच इज 1 and 2. नेक्स्ट इज वर्क कमिटीज, सेफ्टी कमिटीज एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ. तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्योंकि इन कमिटीज में देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्कर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ ILO एज पर द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन जो 1944 में आया था. इसके हिसाब से जो ऑप्शन सी था कि पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है और हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी. Next is which one of the following is an exception from the 5 functional types of unionism identified by Robert Hoxie. तो रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 अलग अलग प्रकार की यूनियनिज्म की बात करी थी. बिजनेस यूनियनिज्म की बात करी थी, प्रेडेटरी की बात करी थी, रिवॉल्यूशनरी की बात करी थी, अपलिफ्ट की बात करी थी, डिपेंडेंट की बात करी थी, बट देयर वाज नो सच थिंग एज इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, हेंस इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन और हमारे लिए सही आंसर. Okay. Next is which one of the following is the process in which representative of workers and employer involved in an industrial dispute are brought together before a third person or a group of person who facilitate through mediation to reach a mutually satisfactory agreement. तो mediation word जहां आ गया वहां पे हम सीधे चले जाएंगे कंसिलिएशन पे और ऑप्शन सी को हम टिक करके आ जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. सो दीज केसेस जहां पे इंटरप्रिटेशन की बात आती है, एप्लीकेशन की बात आती है या फिर सब्सिडरी अलायंस की बात आती है, तो ये जो भी डिस्प्यूट्स हैं ये सारे एपिलेट अथॉरिटी पे ना जाके ये सारे जाते हैं लेबर कोर्ट पे, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी.
Next is a union whose membership may cover workers employed in many industries, employments and craft is known as. तो बेसिकली आप स्टेटमेंट से ही समझ जाएंगे कि ये एक जनरल जेनरिक चीजों की बात कर रहा है और सही आंसर इसका जनरल यूनियन ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव्स टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। पावर्ड वर्ड जहां आ गया वहां पे सीधे सीधे मेरे दिमाग में आता है प्लूरिस्टिक थ्योरी की बात करता है, जो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन को एक पावरफुल ग्रुप दिखाता है और दोनों ही एक पावर के लिए पावर स्ट्रगल कर रहे हैं। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा pluralistic perspective. Next, the provisions of workers' participation in management of industries is provided under Article 43A of Indian Constitution of India. Amendment के थ्रू 1970s में इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। तो क्या नहीं है यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट? ओपन शॉप सिस्टम जो है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैच्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। वर्ड्स को ध्यान से देखिए, स्टैच्यूटरी मशीनरी की बात कर रहा है, यानी किसी एक्ट में वो दिया गया होगा और हम जानते हैं कि ईएसआईसी एक्ट जो है 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। तो ये सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर एक्चुअली में क्या है? ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो लेबर है उसको एक सिटीजन माना जाएगा, जिसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और दे शुड बी कंसल्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क कंडीशन। तो ऑप्शन सी सीधा सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा और इसको हम टिक कर देंगे। Next is who among the following can be appointed as the chairman of Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act 1948। तो इसमें जो चेयरमैन होता है वो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है और इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट लिस्ट में कौन नहीं आता? रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल जो है, ये जो मैटर है ये स्टेट लिस्ट में स्पेसिफिकली आता है और इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। Next is the assumption that, excuse me, the assumption that man is selfish and self-centered and always strives to achieve his own ends even at the cost of others। तो ये सीधा सीधा पुलिस थ्योरी की बात कर रहा है, पुलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, जो ये मानता है कि एम्प्लॉयर हैज टू बी एम्प्लॉयर खुद से कुछ नहीं करेगा, ही हैज टू बी प्रेशराइज्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। तो पुलिस थ्योरी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डॉक्टर आइक्राइट फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। तो एफएओ के फर्स्ट डायरेक्टर थे ये, इन्होंने मिनिमम वेज से रिलेटेड फॉर्मूला दिया था जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया था और इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज एक स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी सब लोग हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी का राइट है और इसी से रिलेटेड इस पे बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आईएलओ से रिलेटेड ज्यादा लगता है, पर इसको एक्चुअली में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया गया था और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर। तो 1948 में ईएसआईसी में कई सारे बेनिफिट दिए गए थे, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी एक्ट भी हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो मैटरनिटी बेनिफिट पे टिक करके मत आ जाना, सीधे इस पे आना, विच इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। Next is which one of the following is the correct set of contingencies identified by the famous report of William Beveridge in the year of 1942 in his comprehensive social security scheme। तो want, disease, ignorance, squalor and idleness, यही 5 वो चीजें थी और ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना। तो ये पेंशन योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें अगर आप पहले 3 ऑप्शन देखेंगे तो एकदम सही है, पर डी ऑप्शन गलत है क्योंकि जो एप्लीकेबिलिटी है वो 18 से 40 ईयर्स ऑफ सिटीजन के लिए है और इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू ₹2 lakhs। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस देती है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now let us see statement based questions. So in this particular type of questions you will be provided with 2 different statements, as well as you'll have to see whether those statements are correct, and if they are correct, whether statement 2 provides the correct explanation for statement 1. All right, so let's see this particular question. In this question they have said in statement 1 that the force on moon due to earth is action
and force on earth due to moon is the reaction. So they're talking about the action reaction. They're talking about the action reaction. In the second statement, they have said there is an equal and opposite reaction. To every action, there's an equal and opposite reaction. Statement 2 is Newton's third law. It's a general statement of Newton's third law. And what they have said in statement 1 provides you with a correct explanation of the action reaction between earth and moon, and the resultant of this action reaction are your tides, right? So both of these statements are true, as well as statement 2 provides the correct explanation for statement 1. So option A is correct. In the next question, they have talked about common observation that if we place a glass of ice water on the table at room temperature, the ice water gets warmer, the ice melts, right? And the water keep on becoming warmer and warmer. In the second statement, they have said heat is the energy that flows between a system and its environment because of temperature difference between them. In the second statement, they have talked about energy transfer of a system and its environment, right? And if you see statement number 1 talks about evaporation reaction, which is a absolutely correct explanation for a perfect example for statement number 2. So both these statements are correct, with 2 being the correct explanation. Now, if you look at this question, the 2 most important terms in this question are diamagnetic and not. First of all, you would need to know what diamagnetic materials are, and then you need to know which of the given options is not diamagnetic, right? So what are diamagnetic substances? Diamagnetic substances are those substances which move from stronger to weaker external magnetic fields under standard temperature and pressure. All right. The best examples are lead, nitrogen, bismuth, copper, sodium chloride, and water. So they have asked regarding not which of these is not given. Iron is not diamagnetic at STP. All right. The next question talks about the gases and their solubility in water. Talks about gases and their solubility in water. Out of chlorine, ammonia, carbon dioxide, and nitrogen, ammonia gas has the highest solubility. Its solubility is at 31% weight by weight at 25 degrees Celsius in water. All right. Correct answer is ammonia. The next question talks about bleaching powder. This question is very easy if you know how bleaching powder is made. Bleaching powder is made by passing chlorine gas over dry slaked lime. So if chlorine gas is there when bleaching powder is being prepared, the answer becomes very easy, very dominant, chlorine. If also you know the chemical formula of bleaching powder, it's CaOCl2. This is how bleaching powder is referred in the chemistry world. All right. The next question talks about causal agent of chikungunya. Chikungunya is a virus.
chikungunya is a virus. It belongs to the chikungunya family, and I think most of us would have seen a chikungunya infection in our day-to-day life in our family or somebody we know. It causes pain in the joints, fever, nausea, cold, cough, all of these factors come in. It affects your body mechanism as well as your skeletal system, right? Now, in this question, they have talked regarding bioremediation. What is bioremediation? Bioremediation is usage of living organisms to counteract the negative effects on the environment. It can be using bacteria or fungi or lichens or even plants to clean out some of the pollution. All right. So in this question, they have asked regarding bioremediation is used extensively in controlling what? It is extensively used in cleaning up of heavy metal pollutions. The industries which use heavy metal pollutions imply bioremediation in their surroundings so that the pollution which is being created can be nullified. All right. Now, in the next question, they have said beauty of some historical monuments is greatly affected by growth of certain living organisms. These living organisms belong to which group? Now, if you would have gone to any heritage site or any historical buildings, you would have seen green, white color, small layer across the basement of the buildings, and even on the side walls of the buildings, right? You would have all seen those white and yellow. They look they look like small plants and all, right? These microorganisms are known as lichens. Lichens are a combination of fungi and cyanobacteria, which is your blue or green algae. This is your blue or green algae. In this particular symbiotic relationship, fungi plays the dominant role and provides the physical structure of those thalluses which you see in these plants. All right. The next question talks about which of the following organisms have the characteristics of both animal as well as plant. Now, this is a very interesting question. This is a very interesting question because in this you would need to know a bit regarding the regarding the animal as well as the plant world, right? Now, the correct answer to this question is Euglena. Euglena is a protist. It is a protist organism which has the characteristics of both plants and animals. By plant, the major characteristic of a plant which Euglena has, it can create its own food using photosynthesis, right? It utilizes sunlight to create its own food. And by animal characteristics, it can move on its own. It can move on its own. So Euglena is the correct answer. Okay. The next question is a agriculture based question in which they have asked regarding the storage of food grains. Now, this is a very simple question. Even if you are not a farmer, you will know this answer because even in your homes, your mothers will utilize this particular plant for safeguarding your clothes when they are put in storage. The correct answer is neem. The correct answer is neem. Neem is used to store food grains from insects. Okay. Now, we get to the next question, which is CD-ROM is a what? CD-ROM
CD-ROM is an optical storage media and is an example of secondary memory systems. Example of secondary memory systems. We all know about CD-ROMs, DVDs, Blu-rays. They all utilize laser to read, right? So they are optical storage media, as well as they do not form the primary memory. They do not form the primary memory of a computer system. Primary memory is what? Your RAM and ROMs, right? This form your secondary memory. It's an external piece of memory that you utilize for storage. The next question talks about WAP. It is asking regarding what WAP stands for. WAP stands for Wireless Application Protocol. Wireless Application Protocol. WAP offers internet communication over wireless devices such as your mobile phones. Okay. Now, next question talks about the Bluetooth technology. Bluetooth technology is a short range. It's a small range technology in which two devices need to be connected with each other to share data. Now, in the statements, what they have given, first statement says sending of files within the range of 10 kilometers. This is absolutely wrong. You cannot send emails over Bluetooth. You can send files, small files, like your music files or pictures or things like that you can send, not emails. The option C says wireless connection between various devices, equipments over short distances. This is absolutely correct. You cannot download movies from the internet using Bluetooth. Two devices need to be connected with each other for sharing of data. Now, the next question talks about the basic functionalities of a computer. Basic functionalities of a computer. Computer accepts and processes data. That is what your input devices and your CPU is for. It stores data because of the memory that is there in the CPU. Then it says scan data. Scanning is not a basic function. Scanning is not a basic function as it requires a peripheral device to be attached to the computer so that scanning can be done. So the correct answer is scan text. Okay. The next question asks regarding which one of the following is a hardware. Hardware is something which you can touch. Right? Something which you can touch. So in this question, what they have given, PowerPoint is an application. Printer driver, again, application. Operating system, again, application. All of these are softwares. All of these three are softwares. The correct answer is control unit, and it is an integral part of CPU. Okay, question is which one of the following is not a feature of monopolistic competition? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंपनीज होती हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो एक दूसरे से compete करती हैं, वो सेल करती हैं प्रोडक्ट जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं. वो किस बेसिस पे अपनी जो एक दूसरे से कंपनी जो है वो compete करती है, वो उनके ब्रांड और क्वालिटी के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग, ये दोनों किसका एग्जांपल है? ये मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल है. तो अब उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो मोनोपोलिस्टिक का नहीं है. तो फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. बिल्कुल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. तो ये तो फीचर है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर. उसके बाद है नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट.
बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट प्रोडक्ट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफर करती है कंपनी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस, कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। नो, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है। ये किसका फीचर है? ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। तो आंसर सी इज करेक्ट, कि प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस ऑन कोल एट ₹100 per ton is a type of कार्बन टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होता है, ये जो सेस ऑन कोल एट ₹10 इज ए टाइप ऑफ कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या होता है? ये चार्ज होता है उन फर्म्स पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एक्सेस अमाउंट में। ये हम किस लिए लगाते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को एक्सेसिव एमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड के। इसलिए कार्बन टैक्स को इम्पोज किया जाता है कुछ फर्म्स पे जो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये किस बेसिस पे चार्ज होता है? ये पर टन के बेसिस पे चार्ज होता है। कार्बन टैक्स किस बेसिस पे चार्ज होता है? पर टन के बेसिस पे। सो सेस ऑन कोल एट ₹100 per ton इज अ टाइप ऑफ कार्बन टैक्स। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ना हम दो मेथड से मेजर करते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। 2014 तक तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को ही यूज करते थे, बट आफ्टर 2014 हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं। तो क्या होता है, जो कोर इन्फ्लेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मतलब कि जितनी भी कमोडिटीज गुड्स और कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका जो इन्फ्लेशन होता है ना वो कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड होता है। एक्सेप्ट जो भी गुड्स वॉलेटाइल नेचर की होती है ना, वो कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं होती। वॉलेटाइल नेचर मतलब जैसे कि फ्यूल, जिनका प्राइस चेंज होता रहता है, फूड या फिर पेट्रोलियम, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इंक्लूड नहीं होता है कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें वॉलेटाइल नेचर की कमोडिटीज इंक्लूड नहीं होती हैं। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे टाइप की कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग वॉलेटाइल नेचर वाली, इंक्लूडिंग फूड, इनकम टैक्स, फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब भी हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर इंक्लूड होता है। इसीलिए ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज इग्नोर आर्टिकल्स ऑफ वॉलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल यही तो डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया कि कोर इन्फ्लेशन में जो है सिर्फ स्टेबल कमोडिटीज की गुड्स इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, जबकि हेडलाइन में वॉलेटाइल नेचर के गुड्स भी इंक्लूड होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द चॉइस ऑफ टेक्निक। तो कौन है ऑथर चॉइस ऑफ टेक्निक का? दैट इज अमर्त्य कुमार सेन। A.K. Sen. Amartya Kumar Sen is the author of Choice of Technique. Next is which one of the following bodies has formulated the National Student Startup Policy launched by the President of India in November 2016? किसने formulate किया है? That is AICTE. AICTE stand for All India Council of Technical Education. AICTE stand for All India Council of Technical Education. किसने फॉर्मुलेट किया है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने।
तो अब वो क्या कह रहे हैं, नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, ये कब आई थी, ये आई थी 2016 में। और इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था 1 लाख स्टूडेंट स्टार्टअप क्रिएट करना एंड मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ताकि इससे क्या हो कि हमारे क्या हो कि हमारी डेवलपमेंट हो इकोनॉमी में, जो हमारा यूथ है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करे, है ना। तो ये कब तक अचीव करना था, विद इन 10 ईयर्स। विद इन 10 ईयर्स इस टारगेट को अचीव करना है कि 1 लाख टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टूडेंट स्टार्टअप क्रिएट करने हैं और मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ये कब तक करना है, विद इन 10 ईयर्स, 2025 तक। अंडरस्टूड। तो ये किसने फॉर्मुलेट किया है, AICTE ने। इसका मेन पर्पस क्या है, जो हमारा इंडियन यूथ है वो कंट्रीब्यूट करे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। नेक्स्ट इज, who among the following was the chairman of the working group for determining the methodology for construction of PPI in India? कौन है, that is B.N. Goldar. ऑप्शन डी इज करेक्ट। PPI क्या होता है, PPI ना मॉनिटर करता है प्राइस जो भी चेंज हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये मेजर करता है जो भी प्राइस जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो हम सोल्ड कर रहे हैं कंज्यूमर को या फिर इंटरमीडिएटर कंज्यूमर को, वो प्राइस मेजर करता है कि क्या क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में। वो कौन करता है, दैट इज PPI करता है वो, ठीक है। जो करंटली में ना PPI जो है वो इंडिया में यूज नहीं हो रहा है, मेजर नहीं हो रहा है, कैलकुलेट नहीं हो रहा है इंडिया में। तो कौन थे 2014 में चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ PPI इन इंडिया, दैट इज B.N. Goldar. ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, question is, which one of the following scheme is aimed at all-round development of adolescent girl in the age group of 11 to 18 years and making them self-reliant? तो ऐसी कौन सी स्कीम है, that is RGSEAG. It stand for Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girl. अब इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था एडोलसेंट गर्ल की सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, है ना। इसका ना मतलब कि इनका मेन पर्पस था इम्प्रूव करना उनके न्यूट्रिशन को और उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनके अवेयरनेस प्रमोट करना अबाउट हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, फैमिली, चाइल्ड, इन सब के बारे में अवेयर करना, उनको अवेयरनेस प्रमोट करना, उनकी न्यूट्रिशन हेल्थ को इम्प्रूव करना, हेल्दी लाइफ, ये सब इस जो स्कीम का था वो मेन पर्पस था। इसकी फुल फॉर्म है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ WTO? ऐसी कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है? सबसे पहले WTO होता क्या है, WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब आया था, कब एस्टैब्लिश हुआ था, ऑन 1 जनवरी 1995। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब एस्टैब्लिश हुआ था, ऑन 1 जनवरी 1995। अब ये करता क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स को देखता है, ओवरसीज करता है अमंग नेशन, ताकि जो भी ट्रेड फ्लो हो रहा है ना वो स्मूथली फ्रीली हो, जितना भी पॉसिबल हो सके। तो ये उन रूल्स को देखता है। करंटली में इसके कितने टोटल WTO के मेंबर्स हैं, दैट इज 164 कंट्रीज जो है वो WTO की मेंबर हैं। जो लास्ट कंट्री ऐड हुई है, पहले 163 थी, लास्ट कंट्री जो ऐड हुई है दैट इज अफगानिस्तान। अंडरस्टूड। अफगानिस्तान रिसेंटली ऐड हुई है। अब उसने पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है WTO का। चाइना बिल्कुल है, जापान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, लेकिन जो ईरान है वो WTO की मेंबर नहीं है।
इंडिया भी WTO की मेंबर है सिंस 1 जनवरी 1995। जब से ये बना है तब से ही इंडिया भी इसका मेंबर है, लेकिन ईरान जो है WTO का मेंबर नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट, मतलब ये मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज ए स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन। ये जो स्टैंड अप एंटरप्राइज ना एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कब शुरू हुई थी? अप्रैल 5 2016 में स्टार्ट हुई थी। इसका मेन काम क्या था? जो भी पीपल जो है शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, या फिर जो वुमेन हैं उनको लोन प्रोवाइड करना बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। किस लिए? बिजनेस सेटअप करने के लिए, ताकि इससे क्या हो, इसका मेन काम क्या था? किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो ये जो है ना, ये जो लोन प्रोवाइड करती है ना, ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो स्क्रैच से शुरू होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से स्टार्टअप करते हैं उनको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये जो स्टैंड अप स्कीम थी, इंडियन स्कीम थी, वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जो भी बिजनेस शुरू से शुरू हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही लोन प्रोवाइड करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम पुराने बिजनेस में इन्वेस्ट करें उसके लिए ये लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, जो स्क्रैच से शुरू होता है सिर्फ उसी के लिए। अब कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइज हैं जो हम इस स्कीम के अंडर एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर सकते हैं हम अपनी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश, सर्विस में भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मिंग सेक्टर में हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फार्मिंग में नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। नेक्स्ट इज Who among the following were conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratan Award for the year 2016? 2016 में किसको अवार्ड मिला था? जीतू राय को, दीपिका कर्माकर को, पीवी संधू को, साक्षी मलिक को। इन चारों को ही 2016 में अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिसेंटली 2022 में अगर हमसे पूछे तो किसको अवार्ड मिला है? एक ही स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिला है, दैट इज शार्थ कमल। सिर्फ शार्थ कमल ही ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, जो उसने कॉमनवेल्थ में दिखाई थी 2022 में, उसके लिए उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। So, moving forward, the first question that we have is, which of the following is the synonym of the word written in capital letters, that is fundamental? अब आप में से जिन लोगों को फंडामेंटल का मतलब नहीं पता, फंडामेंटल का मतलब ये होता है समथिंग विच इज नेसेसरी, या फिर कोई ऐसी चीज विच इज डेस्टिन्ड, या विच इज समथिंग विच इज लाइक ऑलरेडी प्रूवन, या फिर कुछ ऐसा जिसके जिन चीजों को मान के आप अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, आप अपनी लाइफ में चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। समथिंग विच इज वेरी मच प्रेवलेंट, समथिंग विच यू यूज लाइक रिलीजियसली इज नोन एज फंडामेंटल। तो इसमें हमें ढूंढना है इन सिनोनियम। So the options that we have is productive, essential, successful, effective. Since I told you कि fundamental का basic मतलब ये होता है something which is necessary और which is important, right? तो इनमें से जो सबसे nearest word जो इसके meaning के साथ synonym में बैठता है, that is your essential. That is option B. Next we have is, which one of the following is the synonym of the word written in the sentence, she has the habit of using hackneyed and redundant examples from her past even while dealing with the future generation. तो basically हमें इस word का सिनोनियम ढूंढना है, यानी नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है। इस वर्ड का बेसिकली मतलब ये होता है समथिंग विच इज ओवर यूज्ड। हैकनेड का बेसिक मतलब ये होता है समथिंग
ओवर यूज्ड। आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को बार बार यूज करते हैं, वही टिपिकल एग्जांपल्स देते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी बताते हैं जो आप वही टिपिकल अपने वे में बताते हैं, अगेन एंड अगेन आप उसको यूज करते हैं। जब आप उसको यूज करते हैं तो वो एक बहुत ही टिपिकल चीज बन जाती है, ठीक है। तो हैकनेड का मतलब ये होता है समथिंग ओवर यूज्ड, और बेसिकली याद रखने के लिए टिपिकल, ठीक है। तो हमारे पास क्या वर्ड्स है यहाँ पे, इनडिफरेंट, इमेजिनेटिव, क्लीशेड, इम्प्रेसिव। इनडिफरेंट अलग होता है, इमेजिनेटिव आप लोगों को पता होगा, किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज के बारे में सोचना। क्लीशेड और इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव होता है किसी को आप अपनी चीजों से इम्प्रेस करते हैं वो। अब क्लीशेड का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज अगेन टिपिकल। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरा कोई दोस्त है हु इज टेलिंग अ वेरी क्लीशेड स्टोरी, वेरी टिपिकल स्टोरी, जो कि यार हर कोई बोलता है, ठीक है। सो अगेन हमारा यहाँ पे जो वर्ड है हैकनेड, इसके साथ जो सिनोनियम बैठ रहा है दैट इज क्लीशेड, दैट इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। Next we have is which one of the following is the synonym of the word written in capital letters, that is immaculate, ठीक है। तो immaculate का बेसिक मतलब होता है समथिंग विच इज नीट एंड क्लीन, ठीक है। इमैक्यूलेट का ये मतलब होता है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस क्या है, स्पॉटलेस, एक्साइटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड, नीट एंड क्लीन सबसे ज्यादा सिनोनियम में बैठ रहा है स्पॉटलेस के साथ। जिन लोगों को स्पॉटलेस का मतलब नहीं पता, स्पॉटलेस का मतलब होता है समथिंग विच इज क्लियर, या फिर विदाउट एनी थिंग्स, एनी स्पॉट्स और एनी काइंड ऑफ रिंकल्स और स्टफ, तो फिर उसका ये मतलब होता है। तो हमारा जो वर्ड है इमैक्यूलेट, उसके साथ जो वर्ड सिनोनियम बैठ रहा है दैट इज ऑप्शन ए, स्पॉटलेस। नेक्स्ट वी हैव इज which one of the following is the antonym of the word written in capital letters in sentence, that is there is a great deal of enmity। अब यहाँ पे चेंज बस ये हुआ कि एंटोनियम यानी कि इनवर्स यानी कि उल्टा। पहले हमसे अभी तक सिनोनियम्स पूछ रहे थे, अब हमसे एंटोनियम पूछ रहे, यानी कि अब हमें इस वर्ड का सिमिलर नहीं बताना है, हमें इस वर्ड का उल्टा बताना है। यानी कि इसका इनवर्स मतलब क्या होगा, एनिमिटी का बेसिकली मतलब आपका होता है एक रिवेंजफुल फीलिंग रखना, या एक दुश्मनी की भावना का रखना। तो रिवेंजफुल, एक सेकेंड, रिवेंजफुल फीलिंग, ठीक है। तो आपका एनिमिटी का बेसिक सा ये मतलब होता है। उसके बाद अब हमें इसका एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, दैट इज इसका उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमिटी, कॉपरेशन, डिस्प्यूट, हॉस्टिलिटी। जो एमिटी है, एमिटी का बेसिक मतलब होता है टू हैविंग अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस, और एक फ्रेंडली इंटरेक्शन रखना लोगों के साथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एमिटी। तो एनिमिटी के साथ जो बिल्कुल एंटोनियम बैठ रहा है इन सब मीनिंग्स में, दैट इज एमिटी, दैट इज कीपिंग अ फ्रेंडली इंटरेक्शन। Next we have is which one of the following is the antonym of the word written in capital letters, that is reluctant। रिलेक्टेंट का बहुत ही बेसिक मतलब अगर आपको सीधे सीधे समझना है, जिससे आप लोगों को याद रहेगा, दैट इज जिद्दी। जिद्दी होता है रिलेक्टेंट का मतलब, और इसको आप और लैंग्वेजेस में आप अनविलिंग भी कह सकते हैं, या फिर समवन हु इज लाइक वेरी स्टबन, या फिर ऐसा कुछ। और इसका हमें उल्टा वर्ड ढूंढना है, दैट इज एंटोनियम ढूंढना है। सो द ऑप्शंस दैट वी हैव इज एंशियस, हैप्पी, ईगर, अनविलिंग। सो रिलेक्टेंट का जैसे आपको बताया मतलब होता है समवन हु इज स्टबन, राइट, या फिर जिद्दी। तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, इसका उल्टा जो डायरेक्ट मीनिंग हो सकता है वो हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं, जिसका मतलब है ईगर। ईगर का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, या फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड उस चीज में। जैसे ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस ही है, शी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। इसमें मतलब जो ये पैसेज है पर्टिकुलर, वो ये बता रहा है कि द पर्सन, जो लेडी है, वो अपनी कार बेचने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज रिलक्टेंट, शी वॉज स्टबर्न टू सेल हर कार। बट इफ वी विल पुट दिस वर्ड ईगर,
this will change the scenario completely, which will mean that this person wants to sell her car and she is really eager to sell it. Eager का मतलब होता है काफी ज्यादा invested या excited. ठीक है, so this gives us the correct option, that is option C. Next we have is, which one of the following is the antonym of the word written in capital letters? So we have, I cannot comply with the queer regulations of our land. ठीक है, तो queer का मतलब basically ये होता है something which is very strange और odd. ठीक है, जैसे कोई आपने क्वेयर ऑब्जेक्ट देख लिया, आप रोड पे चल रहे हैं, यू सॉ समथिंग विच सीम्स वेरी स्ट्रेंज, या फिर ऐसा जो बहुत अजीब सा लग रहा है, उस पर्टिकुलर चीज का पार्ट नहीं लग रहा है, तो उसे आप क्वेयर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी क्वेयर। जैसे इस सेंटेंस में लिखा, आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वेयर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड, दैट कुड बी ऑड रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। तो हमें इसका बिल्कुल उल्टा निकालना है, तो हमारे पास है स्ट्रेंज, निम्बल, एवरीडे, कस्टमरी। अब कस्टमरी का बेसिक मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज बीइंग फॉलोड, या फिर विच इज मोर ऑफ अ कस्टम और अ रिलीजन विच इज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, so this is the meaning of customary. So if we have to go for the antonym, we would have to go with the option D, that is customary. Next we have is, which one of the following parts of the sentence, as you know that the ignorant are easily duped, has an error. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वेयर इज द एरर। तो इसमें द लाइन गोज लाइक दिस, एज यू नो that the ignorant are easily duped। यहाँ पे जो एरर है वो इस वर्ड में है, दैट इज दैट। यहाँ पे दैट should be removed and we should write this like, as you know the ignorant are easily duped. This should be the correct formation of this sentence, that is हमें यहाँ पे जो correct option, that is option B, that is that the ignorant should be removed. Next we have is, which one of the following parts of the sentence, after a lot of argument I brought him forward to my point of view। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इस पे पर्टिकुलरली फोकस करें, brought him forward। ठीक है, तो brought him forward का मतलब ये होता है brought him forward का बेसिक मतलब ये होता है कि to present something, कि I want to present something, I want to bring this forward, तो उसका ये मतलब होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है जिसको हमें चूज करना है, दैट इज I brought him around। brought him around का बेसिक मतलब ये होता है टू adopt। जैसे यहाँ पे आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि आई ब्रॉट हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाता। इफ द पर्सन वुड हैव रिटन आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो अराउंड का ये मतलब होता है एडॉप्ट करना किसी चीज को। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इसका फिर सिनेरियो ऐसे होता कि मैंने अपने आर्गुमेंट से इस इंसान को
इंट्रोड्यूस करवाया और इसे अडॉप्ट करवाया। तो यहाँ पे वी वुड हैव टू गो विद द ऑप्शन बी, दैट इज आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, विच इज द error in this particular sentence. Next we have is, which one of the following parts of the sentence don't ask him about he, because if he starts talking about his health, you will never get off from him, has an error. Because if he starts talking about his health, you will never get off from him. अब यहाँ पे अगर आप फोकस करो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, you will never get off from him. अब get off का बेसिक सा मतलब होता है उतरना, to go down or to get down. मतलब आप किसी चीज के ऊपर चढ़े हुए हैं, मान लीजिए आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप किसी पीक के ऊपर चढ़े हैं, एंड देन आई से टू गेट ऑफ, दैट मीन्स आप उस क्लिफ से नीचे उतर जाए। बट यहां पे इस सेंटेंस में दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी लाइक टू गेट अवे। अगर हमने यहां पे गेट अवे का यूज किया होता, जिसका मतलब होता है to go far, so that would have been the correct choice here. So based on this conclusion, we would have to go with the option C, that is get off from him. Next we have is, which of the following words can be used as a substitute for the phrase? Substitute. अब यहाँ पे synonyms और antonyms या error नहीं होंगे, हमें इन particular phrases का substitute निकालना है। A nursery where children of working parents are cared for while their parents are at work. अब इसमें इस इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेसिक सा इन्फो होना चाहिए कि ये कैसे यूज हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ जो ऑप्शंस है दैट गोज लाइक स्कलर, फ्रेश, डॉर्मेट्री, रिफेक्टरी। तो बेसिकली a place where children are being kept by their parents while the parents are working is called creche. While parents are working. So यहां पे हमें ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा, दैट इज क्रश। नेक्स्ट वी हैव इज, which one of the following words can be used as a substitute for the phrase that is that which cannot be taken by force? ठीक है, अब हमारे पास इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल या फिर कोई चीज जो नहीं हो सकती, तो ये इस बात का मतलब नहीं है। इम्प्रॉबेबल मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है या फिर जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो ये भी इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब नहीं है। इम्पैकेबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या बहुत ज्यादा रॉबस्ट हो। रॉबस्ट से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा ऐसी चीज हो जो हिल ना सकती हो अपनी पोजीशन से, इसका वो मतलब भी नहीं है। अब इम्प्रेग्नेबल जो हमारे पास बच्चा है, इसका मतलब होता है आपका अनेबल टू कैप्चर समथिंग, और हमारे यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब यही है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, विच इज synonym to unable to capture. So we would have to go with the option D, that is impregnable. Next we have is, which one of the following is the appropriate question tag in the sentence? Take a seat. Shall you? Can't you? Won't you? Would you? अब यहां पे हमारे पास जो करेक्ट चॉइस रहती है दैट इज won't you. Which one of the following is the appropriate question tag in the sentence? Anyone can make mistakes. Anyone can make mistakes. Isn't it? Shall they? Can't they? Isn't it? अब यहां पे बेसिकली आपके imperative sentences का यूज हुआ है
और जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो उसमें जब आप क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स या फिर ऐसा कुछ, तो फिर आपका जो ऑप्शन होता है दैट इज मेनी टाइम्स can't they. So here we would have to go with option C, that is can't they. Next we have is which of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence. He is fond of art and seems suited to be an artist. अब हमें यहाँ पे एक ऐसे फ्रेज का यूज करना है which would fit here in this particular sentence, that is he is fond of art and seems dash to be an artist. The options that we have is fit out, bring out, cut out या फिर suit out. So here we would have to go with the option that is cut out, क्योंकि cut out का basic मतलब होता है to bring something. Next we have is we were happy in the beginning but now all troubles have dash, और यहाँ जो हमें फ्रेज का हिंट दिया है दैट इज appeared. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है cropped up, come about, come out, rushed in. अब appeared का जब हम यूज करते हैं ना, तो ये जो आपका वर्ड है cropped up, इसका मतलब होता है come to notice, come to notice and that too unexpectedly. यानी कोई ऐसी चीज जो आपके लाइफ में आ जाती है या फिर आपकी कोई प्रोसेस के बीच में आ जाती है अनएक्सपेक्टेडली, उसे बोलते हैं क्रॉप्ड अप करना. अब जैसे ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव, अगर हम यहाँ वर्ड डाले क्रॉप्ड अप तो इसका काफी ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि इसमें द पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, सो द पर्सन इज सेइंग दैट वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव डैश क्रॉप्ड अप, क्योंकि क्रॉप्ड अप का यही मतलब होता है टू कम टू नोटिस in a very unexpected way. So here we will have to go with the option A, that is the correct choice. Next we have is which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in all the sentence? No one knows how it all happened. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे पर्टिकुलर हिंट है दैट इज happened. तो now we would have to go one by one by these choices that we have, that is came across, came about, came into, came forward. तो यहाँ पे came across का आपका ये मतलब होता है to meet by chance. ठीक है, came about का आपका ये मतलब होता है taken place. कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है आपकी लाइफ में which just came about, which just come about. ठीक है, came into का ये मतलब होता है brought to a result. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, एंड देन द रिजल्ट कम्स. ठीक है, तो हियर आई केम इनटू द रिजल्ट्स. ठीक है, द सेंटेंस विल गो लाइक दिस, ब्रॉट टू द रिजल्ट. एंड केम फॉरवर्ड का ये मतलब होता है टू वॉलंटियर. जैसे अगर मान लीजिए मेरे कॉलेज में या फिर मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है टू गो एंड ऑल दैट स्टफ, देन आई वॉलंटियर फॉर दैट. सो केम फॉरवर्ड का ये मतलब होता है. तो यहाँ पे जो हमारा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस बैठेगा इसके साथ, क्योंकि कंसर्निंग दैट वी हैव द हिंट हियर दैट इज हैपेंड. So here we would have to go with the choice came about, because again
ये सिनोनियम है happened के साथ, बिकॉज came about का आपका मतलब होता है taken place. No one knows how it all came about. यानी how it how it taken place, how the particular thing took place, how the particular thing happened. So here the correct option will be option B, that is came about. Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? I have to dash here finish this work before I leave tomorrow morning. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो है क्लियर अप, क्लीन अप, फिनिश अप, डू अवे विद. अब यहाँ पे अगर आप क्लियर अप पे फोकस करेंगे, इसका मतलब होता है टू फिनिश समथिंग. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सिनोनियम है हमारे इस वर्ड के साथ, यानी कि हमारे हिंट के साथ, दैट इज फिनिश. तो वी वुड हैव टू गो विद द ऑप्शन ए, दैट इज क्लियर अप. ठीक है, तो आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज क्लियर अप का मतलब होता है टू फिनिश समथिंग. नेक्स्ट वी हैव इज which one of the following prepositions may be used in the blank space in the sentence? He lived a hand dash mouth existence surviving on just a few rupees a week. We have in, to, for, inside. अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. ये आपका एक जो फ्रेज होता है हैंड टू माउथ, इसका ये मतलब होता है कि समवन हु इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस and they are like looking forward, or they are like looking into immediate things, या फिर they are like looking for their necessary things, या फिर ऐसी चीजें जो important है जैसे खाना पीना, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो लिविंग के लिए important है, उनका फोकस उनके ऊपर है. so something focus on something which is important or necessary. ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रेज को ध्यान में रखते हुए वी वुड हैव टू गो विद ऑप्शन बी, दैट इज टू ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ existence surviving on just a few rupees a week. Next we have is which of the following can be used as a substitute for the words written in the capital letters? There is no meaning to cry over the spilt milk. अब इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि गिरे हुए दूध के ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है. दैट मीन्स कई बार आप लोगों के हाथ से दूध गिर जाता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर आप उसके बारे में सोच के ओवर थिंक करके कोई फायदा नहीं है. देर इज लाइक नो फन इन डूइंग ओवर थिंकिंग एंड ऑल दैट, राइट. तो बेसिकली इस फ्रेज का मतलब यही होता है कि देर इज नो नीड टू वरी अबाउट द नो नीड टू वरी about present situation. So concerning this particular thing, the correct option is option A, that is no use of worrying about. Next question we have is which one of the following word can be used as substitute, and the word is human service. ठीक है, तो ह्यूमन सर्विस एक फ्रेज है जिसका ये मतलब होता है हार्ड वैल्यूएबल वर्क. ठीक है, अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है. वी हैव अ रिस्की जॉब, एन अम्यूजिंग जॉब, एन एक्सीलेंट वर्क, एन अनवांटेड जॉब. तो जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, hard valuable work is the definition of human service. So this gives us option C, that is an excellent work. Therefore option C is the correct choice.